Very good evening, students. So we are doing a live mock as a prep towards our RTR exam. So this is the first time live mock for one of our students. So anybody who is able to watch this session or study this session has to make the most of it and apply to their own RT goals. And I hope it helps. So we'll be doing a bit of instructions and then we'll be doing a mock. Victor Tango, Sierra November, India, Mumbai ground. Breakout, Victor Tango, Sierra number, India. Variable check. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. How do you read? Radio 5. So, Shabrish, are you ready for your mark? Just a bit tense, but ready. It's only normal to be tensed, but we have to battle the tension with belief that you will think and perform. Okay? Think and perform is the key to clear the exam. When we get a question paper, when we are set against a timer, and when we are traveling so far, we have so many examinations, and it is considered like so many days the examination goes. And this exam is such that it is considered one of the most difficult exams to clear. The pressure has to be there, but I'm going to give you certain instructions which you have to listen and make a note and try to follow. Okay? It's a non-negotiable instruction or set of instructions. No matter how simple they sound, you have to apply. If these instructions are applied, chances to give a good performance in the exams are increased. And when our chances are increased, then we get good results in the exam. So what are these instructions? We get a question paper, we get a chart. Sometimes the chart will be directly given to you. It might be written on the question paper, or you might have to select a chart out of your booklet of charts. Whatever the case is, be very careful. If a chart is directly given to you, check the serial number. If the chart is not given to you, then you find your appropriate chart, looking at the departure, destination, and the route. We have done that in the chart tracking session. We divide the chart into 4 quadrants. Look for the location designator and the FIR in the location designator. And as per that, we look at the chart. Chances are you will be getting a chart directly, and that won't be much difficulty into accessing the charts. So firstly, cross-verify your chart. First thing that we do when we get the paper, because we are on timer, one mistake that every student makes, that mistake is start giving answers to questions, because the examiner tells them you can start transmitting. When the examiner tells us as students, you can start transmitting, it means your timer has begun and you should start anytime you are comfortable to start. You don't have to worry about the time. You have to only take care about accuracy of your calls. How to achieve this accuracy is why we have the instructions. Instruction number 1. Okay. It's very simple. Shall I Do write? not take it for granted. Sorry? Shall I write it now? What? The instructions. Make a copy. Yeah, this is for you only. Okay. Make a note or take a screenshot. It's easy, it's quick. It's nothing new. In every lecture, we have taught these things to you. It's just a reminder for you to apply before your mock. Okay? Simple. Okay. Instruction number 1. Read the flight plan carefully and if possible, twice. The upper part of the question paper is the flight plan. With respect to exam flight plan, we have 13 elements. Now remember,
Sometimes in a new session or any session, some things could be new, it could be changed, it could be upgraded. Whatever the case is, be careful in looking at the flight plan. No flight is full without a flight plan. Students do this mistake and they don't read the flight plan, they start giving answers to questions. Students generally think that these questions need to be mugged up to be given answers. With whatever leaked question papers circulation is going on, people are just mugging up and trying to give answers to mugged up questions. Now, this is not how RT exam should be. It's a simulation. You put yourself in that situation and you take real-time organic decisions. What do we mean by real-time organic decisions? We mean understand the flight plan. Imagine yourself in the PIC seat. This is the first time, this is the first instance we should, in our course of ground studies, RT and everything, imagine that, okay, this is something that a pilot has to do. This is something a pilot is doing and not just a co-pilot, our commander. So how do we make sure that we are aware about our flight? We do that by looking at the flight plan. We check the call sign. We check the chart. As per the chart, we check departure, arrival, route, alternate. We check the flight rules. That should tell us the first set of information about how my flight is going to be. Call sign will be my identity. Chart to track the route. Call sign, chart, through the chart, departure, destination, route, alternate, and then flight rules. In flight rules and in route, you can have variations. Partially, you can have IFR, lower flight level, higher flight level. Partially, you can have VFR, lower flight level, and so on. Then we look at all the other information like equipment, wake turbulence, aircraft type to give us an idea about our aircraft, what kind of navigation and communication equipments we have, what is our wake turbulence. Then we look at the cruising altitude and realize, okay, this is our cruising altitude. This is where up to, this is the level up to which we have to ask for top of climb if there are climb calls. Majority of the flight will be on this only. And then we look at all other information that is there. In the end, the 13th element would be other information. We need to be careful about it, that we don't miss out on it. Anything related to NOTAM, which is real-time instructions that will require you to keep that in consideration over and above what your flight plan is approved of. So if you have NOTAMs and other information, it could be that a part of your route is unavailable, a part of your flight level on your route is unavailable for this time to this time, and that time could coincide with your departure time. So that is also something that is mentioned in the flight plan. Estimated time of departure, ETD, we call it. It could be different from actual time of departure. We will only know when we are taking off to know what time have we actually departed. But departure time is not takeoff time. Departure time is the time we start moving from our parking bay. Not exactly moving also. The time our chocks are removed from beneath our landing gears. Chocks or blocks. Chalk off time is the start time. We say estimate time of departure. We be careful about the flight plan. We will not be making any mistakes. We be careful about the other information. This will help us in any sort of trick questions that we could come through. So reading the flight plan carefully twice comes hand in hand with track route and track route on chart or track route on correct chart or charts. Sometimes one route could be spread across two charts. Do not be worried. All charts are like jigsaw puzzles of a bigger chart. Okay? Be careful. Look at it. Look at the routes, how they connect. This is very important. No pilot will ever fly without going through the flight plan, without going through all the waypoints, without going through all the ATCs that are going to be available, without going through all the control boundaries, FIR boundaries. It is very important in real life also, as good as in our exam also. Once this is done, 3, read instructions quickly. These instructions are given before your questions and after your flight plan in the question paper. Read them carefully. As a reminder, do not skip any question. Answer all questions in chronology. Continue answering a question till the time ATC examiner tells you to go to the next question.
use RT phraseology, use VOR and DME. In our sessions, we have practiced how to use VOR and DME. Literally, it just is a good reminder for you to not make any mistakes. After this starts your question number. So let's say this is your question number and it has alpha bravo. So be aware of how many questions are there. You don't need to read all questions. Even if you read all questions, it's fine. Some students, they read questions, and if question number 2 or 3 is something that they have not solved ever before, they tend to get a little stressed about it. That gives them panic, and in that panic, they miss out on question number 1 accuracy also. We cannot afford that. It's up to us. These questions are not questions that you need to memorize an answer for. These questions are situations that you are facing or going to face while flying from that particular departure to arrival, flying that particular aircraft. Okay? Are you following, Okay, sir. Shabrish? Okay, sir. So you take it organically. Simple. You see the question, and when you start, you will say question number 1, alpha, and then you will start giving the calls. When you start giving the calls, the strategy. This is point number 4. Last strategy, last strategy number 5. Read the question, understand, make a call in mind, check accuracy of call with respect to call structure, that is W1, W2, W3, W4, relation to question, and then clarity in RT language. Now understand all these things, they seem a bit tricky. Okay, stand by. These things, it might seem like they are lengthy, but if you are conscious about these things, you can get done with all this within a minute or 45 seconds, maybe less, maybe more, it doesn't matter. Okay, it's just that you have to be aware, you have to understand this is how you're going to start giving your call. Even before your call is what you're supposed to do this. You make a call for question number 1 in your mind. In your mind, you check the accuracy. You do not write and keep the call. Understand, look for mistakes. This will help you look for mistakes. Once all is done, mistakes are resolved, then you will start actual transmission. When you start transmission, the technique should be the call is already made in your mind. The call is already made in your mind. Now you know you have to write what you have already made in your mind, which is a corrected call. So you first start writing, and whatever you write, you start speaking that. It might seem too much, but it is not. Go through this part of the session once, twice, thrice. You already know the instructions, you have written it. You can increase the playback speed, go through it a couple of times, and just be conscious about it. Nothing to worry. Students generally think that, okay, what kind of answers do I need to give is what the exam is about. No, the exam is about clarity of your RT language. If you're following the rules, the structure and clarity with respect to how you have learned, even if your intent is not perfect, you will still get 15 out of 20, 7 out of 10. If you know the intent, but your clarity is bad, you're making a lot of transmission errors, then you might not get even 10 on 20 or 5 on 10. So this is how you need to be relaxed. Students generally think, sir, question ka answer I have not memorized. How do I give an answer?
It's not about memorizing, it's about understanding the situation, recalling RT protocols, just talking about that, communicating to ATC in RT language. Simple. When you start transmitting, the best idea is write and then speak, reading what you write. Simple. If you can pull this off, great. If you have a better technique which is in sync with all these things that will allow you to not make a mistake, then you're good to go. Shabrish, are you following? Yes, sir, following. Any doubts? Negative. Then when you're told to go to the next question, you will do the same thing for that question. You'll read the question, understand the question, frame a call in your mind, look at the chart, look at other information, see if there's any connectivity given here or there. If it's a question that is a little difficult, check the next question. It might give you an idea where will you be in future, and that could help you take a decision in this call. Whatever makes sense, analyze everything, then frame a call in mind, make sure the call is perfect, and then start giving the call. Time between two calls is not a problem. If you're told to go to the next question, you can take a few seconds, you can even take a minute before you start the next question. Focus should be on accuracy of the question. Every question I need you to be able to score out of. Question number 1, out of good. Question number 2, out of good. Question number 3, out of good. You're already scoring 60 on first 3 questions. Passing is 50. You've already got 60, which is a good score. The score is not enough if you don't have accuracy, but creating out of order in the first 3 questions, accuracy is high. If anybody scores 60 by scoring 10 out of 20 in question number 1, 10 out of 20 in question number 2, 10 out of 20 in question number 3, and question number 4 maybe 15, and question number 5 is scoring so 15. So if I get 60 like that, 10, 10, 10, 15, 15, 60, I might not pass the exam because I'm not given accuracy. Even though I've scored above 50, how would they help me clear the exam? Because I didn't have accuracy in the language. So my focus should be accuracy, and you will see that your accuracy will help you through the exam. Be relaxed, you enjoy the session. Say you have a long way to go. This is one of the most competitive exams, but this is one of those exams which keeps me in a position on the left seat of the cockpit, even without having flown in the aircraft even once. Here, I don't have to fly the plane, I just to communicate. I'm allowed to take wrong decisions. In case I do, ATC is just going to deny. So before taking any decision, I'm just going to ask request for that with ATC, and those requests are what all calls are about. You talk about your intent, you don't know, you ask for further instructions. Make sense of things and be positive and know that, okay, you have to give accuracy, clarity. Your rate of speech should not be too fast, too slow. If you cannot hear anything ATC says, simply say experiencing QRM, say again all, Victor Tango Sierra November, India. Remember to end with your call sign, remember the call structure, remember the flight plan, remember the other information. For those 5 minutes, that is 25 minutes, you have to be totally engrossed in the chart, in the flight plan, thinking you are flying the plane, and you just have to communicate with the ATC. Understand these things are something that as a pilot you'll be doing on a day-to-day basis. Existingly, if you see on flight radar, you'll see all the pilots that are flying right now, all are doing this, abiding by the flight plan, taking calls. Only good thing, emergencies are not as much as we experience in our RT calls. Emergencies are also only to check your medic skills, distress, that is an urgency skills pan, and then RCF. So that's about it. Is it making sense, Shabrish? Affirm, sir. Any questions? Negative, sir. Chalo. So you are blind, I'll also go blind. Examiner is behind you. Imagine I'm just uploading the question paper and I'll share it on the screen. Can you see it on the screen, or do you want me to send it in person also? So screen is good. Screen is good, right? Okay. Thank you. The moment I tell you you can start transmitting, that's when I'll start your timer. Remember, you don't have to worry about time right now. This is your first mock. You just focus on accuracy and the strategy. Do you have any questions about the strategy? Negative, sir. Yes or no? Be clear. It's RT. Do you have any questions No, about the strategy? no questions about strategy.
Negative. What is no? No is not a word in RT. Get into RT mode. Everything you will Negative. say, think will be in RT, RT, RT. And Negative take your time. doubts. Don't rush. Say negative. Be clear, be slow. If negative has three syllables, use all three syllables. Don't put it in one. Have that control. You're strong. You have high potential. You're hardworking. You're intelligent. Use all that to your advantage by having this control on your performance. Are you following? Let me hear Confirm, that. sir. Negative. Roger. Clear नहीं है. Clarity चाहिए. Come on. Are you following? Confirm, sir. Negative doubts of obstacle. Victor Tango फिर Sierra से November. फिर से फास्ट बोल रहे हो. गो स्लो. मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो. इट विल गिव यू सम कंट्रोल बिफोर यू स्टार्ट द पेपर. वापस से बोलो. एनी डाउट्स? Negative doubts. Victor Tango. नेगेटिव. सीखो कुछ सर बता रहे हैं. कॉपी करो. नेगेटिव. विक्टर टैंगो सियरा नवंबर इंडिया. आई वांट टू हियर दिस द वे आई एम टेलिंग यू. कम ऑन. Negative. Victor Tango Sierra November. India. नेगेटिव फिर भी सही नहीं बोल रहे हैं आप. आई जस्ट वांट यू टू डू समथिंग दैट यू आर बीइंग टोल्ड. ट्राई टू Confirm, डू sir. इट. Negative. Victor Tango Sierra November. India. क्लियर बोलना है. शर्माना नहीं है. क्लियर बोलना है. Negative. पायलट्स पायलट्स कैसे बोलते हैं? हमने सुना है ना पायलट्स कैसे बोलते हैं. Confirm, वैसे sir. ही बात करनी है हमें बस. Negative. Victor Tango Sierra November. India. वेरी गुड. इसी को अपने फ्लो में बोलना है बट इस क्लैरिटी के साथ. वेरी नाइस. चलो. ऑल द बेस्ट. Do well and understand this is just a practice mock. You score less or more, doesn't matter. This is just for your experience. We will be doing one more mock after this, which will be tomorrow for you. Okay. So don't judge yourself, just understand where you stand and accordingly do whatever your final revisions are. Okay. Confirm, sir. Let's go blind. Can you see the screen chart and the question paper? Confirm, sir. Chalo, you can start transmitting. Chart, you can use your own hard copies. I'm just sharing online for reference. And also in your phone, take a screenshot of the question paper, maybe at the end also. Question 1 Alpha. Opal Tower. Victor Tango Bravo. Victor Romeo. On stand 02. Airbus 320. Moderate. Information Delta. Security check clear. IFR Bhopal to Visakhapatnam. Request
Startup on priority. Correction. Person on board. One two zero. Request startup on priority. Victor Tango, Bravo, Victor Romeo, Bhopal Tower, startup approved. Startup approved. Victor Tango. Bravo. Victor Romeo. Roger, Bhopal Tower. Bhopal Tower. Victor Tango. Bravo. Victor Romeo. Startup completed. Request further instructions. Go to next question. Bhopal Tower. Victor Tango. Bravo. Victor Romeo. On stand 02. Request taxi instruction to runway 27. Victor Tango, Bravo, Victor Romeo, Bhopal Tower, runway 27, unavailable. Clear to taxi to runway 32 via taxiway Charlie. Turn left, taxiway Sierra 1. Hold short, runway 32. Report reaching. Bhopal Tower. Say again. Station calling Bhopal Tower. Say again, call sign. Victor Tango. Bravo. Victor Romeo. Bhopal Tower. Uh, start. Bhopal Tower. Victor Tango. Bravo. Victor Romeo. Say again. All. Go to next question. Bhopal Tower. Victor Tango. Bravo. Victor Romeo. Holding short. Runway 32.
Victor Tango, November India Alpha on base leg, requesting departure immediately. Go to next question. Upper pan 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 all aircraft in the vicinity of Nagpur, route November 877, Victor Tango Bravo Victor Romeo, route November 877, flight level 330, radial 13245 DMA, outbound Nagpur, enable aviation due equipment, negative contact with VT-SNI, deviating on, on, turning right at for 15 nautical miles, at 10 nautical miles, will descend flight level 500 feet, flying parallel on deviated track, all exterior lights on, keep a lookout. Go to next question. Pan pan pan. Visakhapatnam,
Tower, Victor Tango, Bravo, Victor Romeo. On finals, reporting cycle of trailing aircraft, backtracking, runway 27, initiating, go around. Go to next question. Question 5, question number 1. Victor Tango, Bravo, Hotel, Sierra, Princess, 1 at outer marker, runway 20. Next. Cross radio 256, 23,000 feet or above. Next. Go to next question. Aircraft is required. Discount. Aircraft is requesting deviation by 15 nautical miles due launch call. Next. No changes in runway and light operation. Next. Maintain takeoff descent 700 till altitude 6,000 feet. Okay. Submit your paper. Just like you send your notes, send me your solution. Promise. So should I write as given in the meeting, mock 1, exam mock 1? It doesn't matter. You can do that, yeah. It's okay. Okay. Quickly share.
Let me know once you have shared. Okay, are we done? Yes, sir, just renaming it. If possible, please turn on your camera for some time. Yes, पर sir. आप पिक्चर्स भी भेज दोगे चल जाएगा, इतना टाइम नहीं लेना है. So it was taking longer than expected. It's okay. So have sent you. You'll be receiving shortly. हम्म. सो बोलो कैसा था एक्सपीरियंस आपका? तो अच्छा था पर फिर गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे जल्दी बोला तो मतलब गलत है लगता है बहुत. क्या वापस बोलो ना, अच्छे से बात करो ना सबरीश. तुमको फर्क नहीं पड़ता है क्या कम्युनिकेशन अच्छा है कि बुरा है? नॉट इवन टेकिंग एफर्ट्स टू स्पीक क्लियरली. मैं बोला पहले ही, मैंने आपको बोल रखा है अभी, अच्छे से बात करो ना यार. क्या किस चीज में खोए हुए हो तुम? आवाज आधी निकल रही है, आधी नहीं निकल रही है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है. कम्युनिकेशन चल रहा है, इतनी सीरियसली हम सेशन कर रहे हैं. अच्छे से करो ना बात. क्या बोल रहे हो? आधी चीजें तो कुछ समझ में भी नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हो. नॉट इवन क्लियरली स्पीकिंग वर्ड्स. तो सर विल स्पीक क्लियरली. सॉरी व्हाट? रोजर सर विल स्पीक क्लियरली. बोला धीरे धीरे बोलो, मान नहीं रहे हो बात मेरी. ये छोटी सी सिली मिस्टेक की वजह से आपके अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस चले जाएंगे तो अच्छा लगेगा क्या तुम्हें? कॉन्शियस रहो वेटिंग ना, नेक्स्ट. सर क्या बोल रहे हैं, कॉन्शियस रहो, उसके ऊपर काम करो. वो सेम चीज मैंने कॉल में नोटिस करी है, कितनी जगहों पर हुई है. लाइक फर्क ही नहीं पड़ रहा है. कुछ टाइम पे तो एकदम मुश्किल से आवाज निकल रही है. ऐसा कौन करता है? ऐसा कोई पायलट बात करता है क्या? ठीक है सर. क्या है ये, राजधानी में बैठे हैं क्या हम लोग? क्या है ये? निगरी सर, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो. कितनी बार मैंने एक चीज बोली आपको. गाय किस चीज की है?
नेगेटिव बोल रहे हो कि क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यू वांट दिस टू बी द रीजन व्हाई एग्जामिनर इज नॉट एबल टू गिव यू मार्क्स? डू यू वांट करेक्ट आंसर? नेगेटिव सर। डू यू वांट करेक्ट आंसर देने के बाद भी एग्जामिनर को लगे कि आपने करेक्ट नहीं दिया है? नेगेटिव सर। तो ट्राई कंट्रोल, कॉन्शियसली कंट्रोल। somebody is asking you to control, show that। एक ही चीज 4 बार बोल रहे हैं ना, इसलिए सर को चिल्लाना पड़ रहा है। ओके सर। ये फिर से इतना फास्ट। सॉरी सर, वो आदत हो गया स्पीड तो में कहते हैं। आदत आई विल चेंज ट्राई। करो ना, 2 दिन की बात है। यस सर, आई विल चेंज। क्या किसको, किसके लिए कर रहे हैं हम? खुद के लिए कर रहे हैं ना। यस सर। वो क्या बोल रहे हैं, 2 मिनट उसको दिमाग में बिठाओ और फिर बोल के देखो, होगा। यू आर नॉट इवन वर्किंग ऑन इट। मैंने इतने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए, यू डिडंट फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस। गाई कर दी पेपर स्टार्ट करने में, 45 सेकेंड में पेपर स्टार्ट कर दिया। आई कुड सी यहाँ पे इतनी डेड एयर आ गई आपके स्टार्टअप कॉल में, बिकॉज पहले चेक नहीं किया आपने। एंड फिर तुम्हें पता चली तुमने मिस्टेक की है, तो तुम्हारी आवाज एकदम कम हो गई, वहां कॉन्फिडेंस जीरो हो गया वहां पर। रिक्वेस्ट स्टार्ट अपॉन प्रायोरिटी सही था, फालतू में करेक्शन होके पीओबी बोल दिया, दिमाग में कॉल बनाया ही नहीं। मैंने बोला आपको इट्स अ नॉन निगोशिएबल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, बताओ मुझे। क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो? कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 जब स्टार्टअप आता है, 10 on 10, 20 on 20, यू स्टार्ट। ये दूसरे अकाउंट से ज्वाइन कर रहे हो क्या आप? सॉरी सर फॉर डिस्कनेक्टिंग। भाई धीरे बात करो, धीरे। कंट्रोल शबरीश, खुद पे कंट्रोल नहीं होगा तो एग्जाम में परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आएगी। कहाँ भाग रहे हो यार, क्यों? कंट्रोल। आदत हो गई, कुछ भी हो गई, आपका काम है आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिया वो फॉलो करना। क्या ये कितने कितने राजधानी की तरह बात कर रहे हो आप? काम डाउन, रिलैक्स। बार बार एक चीज बोल रहा हूं मैं। डू अ सॉरी रीड। सर। अरे फिर से इतना फास्ट। थिंक व्हाट सर इज सेइंग, स्पीक क्लियर एंड स्पीक स्लो। से दैट इन योर माइंड एंड देन गिव मी अ रिप्लाई। आपको मैं इतने टेक्निक्स बता रहा हूँ शॉर्टकट, आप अप्लाई करोगे यू विल गेट द रिजल्ट। I gave you a feedback, but I think you had a disconnection. I'm going to give that to you again. But first, focus on this. Consciously do something that you're being told. Try. Go slow. सिंपल कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, आर्टी कम्युनिकेशन की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। सर रीडेबिलिटी चेक करना। रीडेबिलिटी चेक करना। थोड़ा स्लो बोलो। आप बहुत फास्ट बोल रहे हो, आपकी रेट ऑफ स्पीच बहुत फास्ट है। ऑलरेडी एग्जाम में हाइपर रहेंगे, हाइपर टेंशन रहेगा, पैनिक रहेगा, तुम और फास्ट बोलोगे, एग्जामिनर को नहीं समझ आएगा। इतनी पढ़ाई लिखाई करके गए हो, सब वेस्ट हो जाएगी। तुम चाहते हो सब वेस्ट हो जाए? नेगेटिव सर। नेगेटिव एंड एंड विद द कॉल साइन। सर बोलने की जरूरत नहीं है, कोई आर्मी की क्लास नहीं चल रही है यहाँ पर। फोकस व्हाट आई एम टेलिंग यू। नेगेटिव फर्स्टली एक्सपेक्टिंग। धीरे और क्लियरली बात करो, पहली चीज। ठीक है। एक रीडेबिलिटी चेक करो ताकि मेरे को रेट ऑफ स्पीच समझ आए तुम्हारी। Go slow, have a good moderate rate of speech, not too fast, not too slow. बाय ग्राउंड विक्टर टैंगो सियरा नवंबर इंडिया। ये थोड़ा स्लो था, रीडेबिलिटी still better। और क्या बताया है, पहले दिमाग में बनाना है, फिर चेक। लिखना है, लिखते लिखते बोलना है, तो कंटिन्यूटी आएगी। आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो वो? फ्रेम अ रीडेबिलिटी चेक इन योर माइंड राइट नाउ, फ्रेम इट, दिमाग में बनाओ कॉल, लिखो मत। चेक इफ इट्स करेक्ट और नॉट। इफ इट्स करेक्ट देन जस्ट जो दिमाग में आए वो लिखना शुरू करो, जो भी लिख रहे हो उसको बस बोलना शुरू करो, देखो कितनी अच्छी कंटिन्यूटी आएगी। ट्राई करो। सेम रीडेबिलिटी चेक, फ्रेश कॉल, फॉलो। दिमाग रीडेबिलिटी में बना लो, नाम नहीं बोलना है कॉल का, सिर्फ चेक लेना है। बना लो, लिखना शुरू करो, और लिखते ही जो लिख रहे हो रीड करना शुरू करो। मिस्टेक लिखने में होती है, बोलने में हम करते ही नहीं है मिस्टेक। इट्स अ फुल प्रूफ प्लान, ट्राई टू कॉन्शियसली डू इट। आई एम वॉकिंग यू थ्रू इट। ट्राई, 1-2 बार करो बस, ज्यादा नहीं करना है अभी।
एक दो बार करेंगे, दिमाग में बस कॉन्शियस रहना है, अपने आप किक इन होगा फिर वो। ट्राई तो करो। चलो। यस। शो मी इन रीडेबिलिटी चेक। नंबर ब्राउन विक्टर टैंगो Sierra November India suitability check 1 2 3 4 5 4 3 2 1 how do you read अभी आप लिख के बोल रहे थे कि बोल के लिख रहे थे, बताओ मुझे। सर how do you read में बोल के लिख रहा था उधर और पहुंच गया उसके था उसके पहले? उसके पहले लिख के बोल रहा था सर ठीक है। देखो, अब तक क्या समझा है? इतना मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया है आपको, क्या समझा, क्या है आपने कुछ समझा है? कि आपको अभी भी लग रहा है बस क्वेश्चन के आंसर दे के आने हैं मेरे को? speak in clear and clearly and slowly not too slow so that the we don't I don't lose the mark which I am guaranteed of. So, देखो, एक होता है लॉजिकल अवेयरनेस। जस्ट अवेयरनेस रखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कम्युनिकेशन हो रहा है। कोई पायलट घाई घाई में काम नहीं करता। करता है कोई घाई में काम? डज negative, एनी पायलट sir. वर्क इन हेस्ट? नो, Negative, राइट? sir. नेगेटिव। सोचा तुमने, गलती हुई, यू रियलाइज, कॉन्शियसली रिप्लाई दो। रिप्लाई देने से पहले एक दो माइक्रोसेकंड रुक जाओ, सोचो। ओके। क्लैरिटी चाहिए, बस। क्लैरिटी चाहिए। मॉडरेट रेट ऑफ स्पीच होनी चाहिए, बस। सिंपल। रिलैक्स। पैनिक मत करो, बड़ी बड़ी एग्जाम्स देनी है आगे जाके। दिस इज नथिंग। रिलैक्स। कुछ नहीं होता। इट्स ऑल इजी। एवरीबडी क्लियर्स इवेंचुअली। कौन कैसे पढ़ के क्लियर कर रहा है उसमें उसका हम लोग को पता चल रहा है कितना ग्रोथ हुआ है, नहीं हुआ है। नॉलेज आ गई। अब वो नॉलेज को आपको कॉल्स में रिप्रेजेंट करना है। नाउ फोकस ऑन योर फीडबैक क्विकली। मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए थे, अच्छे से फ्लाइट प्लान पढ़ो, अच्छे से कॉल लो, अच्छे से दिमाग में बनाओ। आई डोंट सी यू फॉलोइंग दैट। ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस ठीक था, बट आपने माइनर मिस्टेक्स की हैं जो मेजर मिस्टेक्स थी। माइनर जो मेजर थी वो सिर्फ सिली एरर की वजह से हो रहा है। सिंपल है, फर्स्ट टाइम में सब करता है। आपको बस जिन चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों को ध्यान में देना है और उन पे काम करना है सेशन के बाद, सोने से पहले। आ रही बात समझ में? तो ही हमें चेंजेस मिलेंगे परफॉर्मेंस में। आपको टेंशन नहीं लेना है क्वेश्चन पेपर्स का, आपको टेंशन नहीं लेना है कुछ भी, आपको सिर्फ जो फीडबैक मिल रहा है वो फीडबैक पे काम करना है। इफ यू डू दैट, द परफॉर्मेंस विल बी वेरी गुड। आर यू क्लियर विद दिस? Affirm Victor Tango Sierra November India. Now that is excellent reply. At least you're making an effort to do that consciously. Good job. बस that's all it takes. धीरे धीरे अपने आप आपका माइंड आपसे एकदम परफेक्ट चीज करवाएगा। We should be conscious what we are doing. That's it. Question number one, Alpha. Startup call is a simple call. I told you I need accuracy. आपने बहुत जल्दी पेपर स्टार्ट किया, मेरे को ऐसा लग रहा है। इसीलिए जैसे ही आपने आईएफआर भोपाल टू, कंफ्यूजन आ गई, विशाखापट्टनम है नहीं है, पता नहीं क्यों डेड एयर आ गई वहाँ पे। उसके बाद रिक्वेस्ट आर्डर ऑन प्रायोरिटी बोल के करेक्शन किया, फालतू में करेक्शन था वो। पैसेंजर ऑन बोर्ड बोला, फिर से रिक्वेस्ट स्टार्टअप ऑन प्रायोरिटी बोला। वो बोलते बोलते तुम्हारी वॉल्यूम एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो गया बिकॉज यू थॉट मैंने मिस्टेक कर दिया। ये सब करने की जरूरत नहीं है। पहले दिमाग में कॉल बनाओ। पहले दिमाग में कॉल बनाओ और फिर उसको कंफर्टेबली लो। फ्लाइट प्लान पहले ही देख लो। अच्छा लगा मुझे कि तुमने कॉल में डाला प्रायोरिटी वीवीआईपी के वजह से, बट मेंशन नहीं किया वीवीआईपी है तुम्हारे पास। है ना? जो भी दिया है सब मेंशन करना है, इट्स अ सिंपल एग्जाम। जो भी है अपने पास, आंसर भी हमारे पास है, सब हमारे पास है, हमने बस लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है। सिंपल कॉल था 10 on 10, वहां पे डेड एयर आ गई, करेक्शन आ गया, और डेड एयर आ गई, और जाते जाते क्लैरिटी चली गई। फालतू है, इनकी जरूरत भी नहीं है, आई नो।
तुम्हें आता है कॉल, बस कॉल लेने से पहले तुम अच्छे से सोच के जो स्ट्रैटेजी दी है दिमाग में बना के कॉल ले लेते तो ये एरर्स नहीं आते। पहली चीज, तुमने देखो छोटे छोटे एरर्स की वजह से पेपर कितनी जल्दी खत्म कर दिया। तुमने पेपर खत्म कर दिया विथ ऑलमोस्ट 8.5 मिनट्स टू स्पेयर। आधे टाइम से पहले ही तुम्हारा पेपर खत्म हो गया और एक अच्छा मौका तुम्हारे हाथ से शायद निकल गया या नहीं निकला, विथ रिस्पेक्ट टू द मॉक। अगर तुम सिली एरर करते हो, अगर तुम सीरियसनेस नहीं दिखाते हो, कभी कभी ऐसे एग्जामिनर्स आएंगे जो बोलेंगे जाने दे, नहीं समझने वाला है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। I'm going to give you simulation to all types of examiners. Most of the times, the ones which are a little strict or which are a little stern with respect to basics. बेसिक्स में ही हमारा की है एग्जाम क्लियर करने का। समझ रहे? इसलिए रश नहीं करना है। सिंपल कॉल था, बताओ इतनी डेड एयर क्यों आ गई? करेक्शन बोल के वापस वही बोला, वीवीआईपी नहीं बोला। व्हाई डिड यू फंबल सो मच इन योर स्टार्टअप कॉल? सर पहले तो मेरे को विशाखापट्टनम का विक्टर इको विक्टर जुलू है ना, मतलब कोलकाता एफआईआर में आ रहा है, तो वो एक कंफ्यूजन आ गया था। आपके पास लोकेशन इंडिकेटर्स का बुकलेट है, बट आपने सही अच्छा। कॉल किया, गलत नहीं किया आपने कॉल। कंफ्यूजन क्या थी यहाँ पर? तो लोकेशन इंडिकेटर का उधर कंफ्यूज हो गया था एक्चुअली। कॉन्फिडेंस रखना है वहां पे, एंड यू हैव टू गो विद द मोस्ट प्रोबेबल आंसर, सिंपल। आपका तो एक्सपीरियंस है एविएशन एग्जाम्स का। सही था, ये सब कंफ्यूजन कॉल लेने से पहले क्लियर होनी चाहिए थी, ताकि कॉल में क्लैरिटी हो ना, डेड एंड नहीं आना चाहिए। बीच में तुम कॉल के, एक कॉल जो खत्म नहीं हुआ है उसके बीच में आप डेड एयर नहीं रख सकते हो। दैट इज कॉल्ड बी नॉट बीइंग सीरियस विद द कॉल। ऐसे लगता है अरे इसको फर्क नहीं पड़ता है, या ऐसे ही आया एग्जाम देने को, इसको और पढ़ने दो, इसको और मेहनत करके आने दो, जब सीरियस होगा तभी क्लियर होगा। ऐसे भी लोगों को जज करना पड़ता है एग्जाम्स में, पता है तुम्हें? बट मुझे तो पता है तुम कितने सीरियस हो। मैं तो तुम्हारे जितना डेडिकेटेड इंसान नहीं देखा कंपैरेटिवली। बट परफॉर्मेंस हमारा ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा तो फिर क्या अच्छी बात है क्या? डजेंट मेक सेंस, राइट? इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले ही चार्ट को देख लो, पहले ही सब कुछ फिगर आउट कर लो, विशाखापट्टनम है नहीं है, पहले ही अपने डिसीजंस ले लो, उसके बाद पहले ही अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ लो, उसके बाद प्लीज कॉल स्टार्ट करना है आपको। आर यू फॉलोइंग? सर। समझ रहे हो कहाँ फिर मिस्टेक हुई हमसे? सर। सिली एरर है, कुछ नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इट्स अ कॉल, मैं नींद में भी उठाऊँ तो तुम ले सकते हो। बट बिकॉज यू गिव मी टू डेड एयर, एंड लास्ट में कॉल खत्म करते करते क्लैरिटी चली गई थी, ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या अपने मन ही मन में कुछ बोल रहा है, क्या है ये, ऐसे आरटी में बात करनी है, सामने वाले को सुनाना है, तो अपने मन ही मन क्या बात कर रहा है। यहाँ पे आपको स्टार्टअप अप्रूव्ड बोला, आपने रिप्लाई दिया, गुड। स्टार्टअप अप्रूव्ड एंडेड विथ योर कॉल साइन, वेरी गुड। फिर बहुत डेड एयर आया। आपको 5 से 10 सेकेंड के अंदर अगर एटीसी का रिप्लाई नहीं आता है तो आपको अपडेट दे देनी है, आपने जो काम किया वो कंप्लीट कर दिया, या फिर स्टेशन रेस करना है। अगर कोई रिक्वेस्ट नहीं, अगर कोई क्लियरेंस नहीं दिया था तो स्टेशन रेस करना है, ये लॉजिक है। यही लॉजिक आपका मिसिंग था पूरे पेपर में, और कुछ नहीं। और ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस से आता है, हम फीडबैक से दिला रहे हैं आपको, कॉन्शियस रहो। बस कॉन्शियस रहो और माइंड में डालो, ये फीडबैक पे काम करना है कॉन्शियसली, बस। माइंड को ऐसे भागने मत दो, बिना किसी, वो बोलते हैं ना, ऐसे ही ऐसे बिना डायरेक्शन के भागने से कोई मतलब नहीं है। बट यू क्लिक्ड, इट क्लिक्ड, मैंने फिर बोला चल ठीक है, उसको हिंट दे देते हैं, रॉजर कर देते हैं। फिर बहुत बड़ा डेड एयर था, 5 से 10 सेकंड के बीच में। मैंने आपको क्लास में सिखाया है 5 सेकंड, आरटी का रूल है 10 सेकंड, दीज आर आरटी रूल्स, कम ऑन। हमने सब रीड किया है। स्टार्टअप पता नहीं क्या बोल रहे थे आप, फिर बोले कंप्लीटेड, रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शंस। ठीक था, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा था, अच्छा था। यू वर ट्राइंग टू डू द राइट थिंग इवन आफ्टर अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन, आई गिव यू क्रेडिट फॉर दैट, वेरी गुड। रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शंस नहीं, स्टार्टअप कंप्लीटेड चलेगा, रिक्वेस्ट फर्दर इंस्ट्रक्शंस बोला, बस क्लियरली बोलो, अच्छा बोल रहे हो, क्लियरली फुर्सत में बोलो। 8 मिनट बच गए, उसका क्या करेंगे हम लोग, कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में वो 8 मिनट हमें कितना फायदा दे सकता है, रियल लाइफ में 8 मिनट में कुछ भी नहीं होता, ऐसे टाइम निकल जाता है हमारा।
सो +1 दे दूंगा क्योंकि आपने बाद में फॉलो अप अच्छा लिया। बट फिर भी कोई एग्जाम में 5 या 4 भी दे सकता है यहाँ पे, तो इसीलिए एरर थी वहाँ पर। बाकी सब ठीक था, कोई इशू नहीं है। स्टार्टअप कॉल, सिंपल कॉल। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रावो। वापस से स्टैंड बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टार्टअप में आपने बोला है। खुद से रनवे नहीं बोलना है। बहुत रेयर टाइम पे आपको खुद से रनवे गैस करना होता है। यहाँ पे रिक्वेस्ट टैक्सी बस। भोपाल टावर, विक्टर टैंगो ब्रावो विक्टर रोमियो, रिक्वेस्ट टैक्सी क्लियरेंस। सिंपल। इट्स अ वेरी सिंपल कॉल। अगर आपने ये रीड बैक क्यों नहीं दिया इसका आपने? सर फॉलो अप नहीं किया, फॉलो अप नहीं कंसल्टेशन। किया ना? आपने देखो लिखा है, विक्टर आपने लिखा है रनवे 27 अनअवेलेबल, क्लियर टू टैक्सी टू रनवे 32। वहां तक तो लिखा है ना आपने? है ना? लॉग्स में देख अच्छा। रहा हूं मैं, लिखा है ना वहां तक? अफर्म यहाँ तक लिखा सर। है। तो फिर से अगेन ऑल क्यों बोला आपने? और ये क्या तरीका है से अगेन बोलने का? आप कौन हो? हम बिना कॉल साइन के एक कॉल छोड़ सकते हैं क्या, रिप्लाई? नेगेटिव सर। हाँ, आपको बस इतना बोलना चाहिए था। ऐसा कुछ अगर होता है, हो सकता है, रीजन देना है। अभी इंस्ट्रक्शंस में बोला था क्या रीजन देना? एक्सपीरियंसिंग QRM। हाँ, बोला था ना? यहाँ बोल सकते हो, भोपाल टावर, विक्टर टैंगो ब्रावो विक्टर रोमियो, experiencing QRM, read you to say again after hold short runway 32। कॉमन सेंस, समझ रहे हो आप? मैच्योरिटी, कुछ भी बुला लो इस चीज को। ये क्या तरीका था? ये बहुत बड़ी मिस्टेक किया आपने, ये हमें एग्जाम में नहीं करनी है। फिर आपने कॉल साइन नहीं बोला, मैं तो आरटी प्रोटोकॉल फॉलो करूंगा हर चीज के लिए। एक है स्टेशन कॉलिंग भोपाल टावर, मतलब तुम्हें बोल रहा हूँ, समवन हु इज कॉलिंग मी भोपाल, हु इज कॉलिंग भोपाल टावर, प्लीज से अगेन योर कॉल साइन। पता नहीं आपने क्या फंबल करा है यहाँ पे। और आपने आगे लिखा भी नहीं है कुछ। इसके आगे का कॉल लॉक क्यों नहीं किया आपने? हम्म ये जो बोला है ये लॉक क्यों नहीं किया आपने? एवरीथिंग दैट यू से यू हैव टू लॉग। आर यू देयर शबरीश विथ मी? सर रेडियो टू, रेडियो टू। या आप वीडियो बंद करो तो आपका नेट थोड़ी देर बंद करके बात करो, शायद नेटवर्क डाउन होगा आपका। 2 मिनट में वापस चला लेना। हाउ डू यू रीड मी नाउ? रेडियो फोर। क्या बोला है? धीरे बोलना है, कम ऑन। क्या बोले? मेरे को 3 4 रेडियो, सुनाई दिया। रेडियो फोर। हम्म मैं बोल रहा हूँ आपने इसके बाद लॉक क्यों नहीं किया ये सब? You have to log everything. Can I see you? यस सर। आपने आई थॉट। ये बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं चलेगा। आपके पास एक चांस है, 25 मिनट है, डू योर बेस्ट। कॉन्शियसली, कम ऑन। बहुत गलत बात है ये। आपने इसमें कॉल साइन नहीं दिया। यू हैव टू एंड ऑल रिप्लाईज विद कॉल साइन। एक्सपीरियंस QRM बोल के, रीडेबिलिटी बोल के से अगेन बोल सकते हो। और से अगेन ऑल क्यों बनाना है जब तुमने रनवे 32 तक लिखा है अपने लॉग्स में? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अफर्म सर। इसका रिप्लाई दो मुझे। आपने यहाँ तक लिखा है, आगे नहीं लिख पाए। कौन सा आरटी वर्ड है, कौन सा आरटी फ्रेज है जिसमें हम सामने वाले को स्लोअर बोलने बोलते हैं? स्पीक स्लोअर है ना हमारे पास, बोल सकते हैं ना यहाँ यस पे सर। स्पीक स्लोअर। यू हैव टू यूज व्हाट यू हैव स्टडीड, टेक अ रियल टाइम कॉल। बस। प्लीज वो आदत मत डालो रटे हुए क्वेश्चंस के रटे हुए आंसर्स देने की। यू आर मच मोर देन दैट। ऑनेस्टली देनी है हमें एग्जाम, और तुमने करी है मेहनत। समझ रहे हो? अफर्म सर। तो आप क्या बोलोगे? भोपाल टावर, विक्टर टैंगो ब्रावो विक्टर, विदाउट कॉल साइन एनी रिप्लाई विल गेट 0। सिंपल। विदाउट योर कॉल साइन। भोपाल टावर, विक्टर टैंगो ब्रावो विक्टर रोमियो, रीड यू टू
स्पीक स्लोअर, से अगेन आफ्टर होल्ड शॉर्ट रनवे 3-2। ऐसा बोलते हैं ना एग्जामिनर, यहाँ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता और फुल मार्क्स भी दे देता, शायद बोलता हाँ ये सही बात कर रहा है, इसको आता है कैसे आरटी करता है। दैट्स व्हाट द एग्जाम इज अबाउट, राइट? आर यू Affirm, sir. फॉलोइंग? Affirm. एंड यू हैव टू लॉग एवरीथिंग, डू नॉट डू दिस मिस्टेक अगेन। फिर कभी आप कॉल साइन नहीं बोलोगे तो आपका W1 हमारे लिए क्या होगा? स्टेशन कॉलिंग मी, मैं कौन हूँ? भोपाल टावर, स्टेशन कॉलिंग भोपाल टावर से अगेन कॉल साइन। तो पता नहीं आपने कुछ तो फंबल किया, अभी हमारे पास लॉग भी नहीं है देखने को क्या बोला क्या नहीं बोला। उसके बाद यहाँ देखो लिखा है गिव रीजन एंड डोंट बी इनफॉर्मल, यू हैव टू बी फॉर्मल, यू हैव टू गिव रीजंस। क्यों बोल रहे हो आप? मेक इट लॉजिकल। क्वेश्चन नंबर 2, होल्डिंग शॉर्ट रनवे 3-2, थोड़ा डेड एयर। उसके बाद जरूरी नहीं है तुम्हें एयरक्राफ्ट का कॉल साइन पता होता, समझ रहे हो? यू जस्ट से व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन, डोंट ओवर थिंक। भोपाल टावर, विक्टर टैंगो ब्रावो विक्टर रोमियो, होल्डिंग शॉर्ट रनवे 3-2, सी एन एयरक्राफ्ट ऑन बेस लेग रनवे 3-2। कौन से रनवे का बेस लेग है? सी एन एयरक्राफ्ट ऑन बेस लेग रनवे 3-2। कभी भी कोई भी रनवे की बात कर रहे हैं उसका नाम डालना है, वो एयरक्राफ्ट के लिए भी तुम्हारे लिए भी, दोनों के लिए। क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट लिविंग एनी रूम फॉर मिसकम्युनिकेशन, दिस इज व्हाई आरटी वाज इन्वेंटेड इन द फर्स्ट प्लेस। और ये क्या है? रिक्वेस्टिंग। रिक्वेस्टिंग करके कोई आरटी वर्ड नहीं है, मैंने नहीं सिखाया है, आज के बाद कभी लाइफ में यूज नहीं करोगे आरटी में। Affirm, sir. इट्स रिक्वेस्ट। रिक्वेस्टिंग बोल के तुम Yes. अपना नाम खराब कर रहे हो एग्जामिनर के सामने। मैंने कभी नहीं सिखाया रिक्वेस्टिंग। ये आपके क्वेश्चन पेपर का इन्फ्लुएंस आने दिख गया है मेरे को यहाँ पर, आने नहीं देना है, समझ रहे हो? Affirm. और क्या रिक्वेस्ट डिपार्चर इमीडिएटली, ऐसा कुछ नहीं होता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट डिपार्चर बोल के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, क्या होता है रिक्वेस्ट डिपार्चर? कैसे देते हैं डिपार्चर? डिपार्चर क्लियरेंस होता है, एटीसी क्लियरेंस। क्या होता है रिक्वेस्ट डिपार्चर? टेक ऑफ को बोलते हैं रिक्वेस्ट डिपार्चर। टेक ऑफ के टाइम सिर्फ टेक ऑफ यूज होता है वर्ड। आपका थिंकिंग सही था, आप वर्ड नहीं प्रॉपर यूज कर रहे हो, ना कॉल दिमाग में बना रहे हो। हर कॉल के लिए मैंने क्या सिखाया? कॉल दिमाग में बनाना है। यहाँ पे भी नहीं बनाया, बना लेते दिमाग में, दिक्कत नहीं होती, फिर देते कॉल, परफेक्शन आती ना यहाँ पे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Affirm. पहली चीज, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू मेक सच मिस्टेक्स, इसलिए मैं आपको ऐसे जवाब दे रहा हूँ। सेकेंडली, आई एम टेलिंग यू हाउ टू डू इट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. बुरा तो नहीं लग रहा Understanding. है तुम्हें? No, sir. क्या Right. करना है समझ रहे हो ना? Affirm. फ्रॉम माई एक्सपेक्टेशन यू कैन डू मच बेटर, इसलिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। मेरा क्या है, सिंपल क्रॉस कट कर करके 25 मिनट का पेपर, 5 मिनट का फीडबैक, आधे घंटे में मैं फ्री हो सकता हूँ। इतना क्यों कर रहा हूँ मैं? पहली बार लाइव मिल रहे हैं, ज्यादा टाइम है नहीं, आई वॉन्ट टू रीच आउट टू यू, समझ रहे हो? आई वॉन्ट यू टू मेक चेंजेस, इम्प्रूव और अवॉइड मिस्टेक्स, सबका मतलब सेम है। अवॉइड मिस्टेक्स, परफेक्शन आ जाएगी। रिक्वेस्टिंग डिपार्चर इमिडिएटली, ऐसा कुछ क्या है? ये कौन है? इतना मेहनत क्यों किया पढ़ाई करके, क्या फायदा ऐसे बात करके? ये ऐसे होगा, सी अनदर एयरक्राफ्ट ऑन बेस लेग रनवे 3-2, would be able to depart before it lands, request enter runway 32, ready to expedite, ऐसा कुछ सोच समझ के। मैं उनके एटीसी, मैं उनके जाने से पहले, आने से पहले जा सकता हूँ, मेरे को परमिशन दो अंदर जाने की रनवे के, मैं एक्सपेडिशियस हैंडलिंग के लिए तैयार हूँ। और चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ वीवीआईपी ऑन बोर्ड, अगर वो ना दे तो, क्योंकि प्रायोरिटी है ना। वो बोलेगा क्लियर टू एंटर रनवे 3-2, आप रीड बैक दोगे क्लियर टू एंटर रनवे 3-2, एंटरिंग रनवे 3-2 विक्टर टैंगो ब्रावो विक्टर रोमियो। जैसे रनवे पे अलाइन हो गए सेंटर लाइन के साथ, आप बोलोगे भोपाल टावर विक्टर टैंगो ब्रावो विक्टर रोमियो रनवे 3-2 रेडी फॉर डिपार्चर, रिक्वेस्ट टेक ऑफ। रेडी फॉर डिपार्चर नहीं भी बोलोगे, रिक्वेस्ट टेक ऑफ।
बस तो ही टेक ऑफ मिलता है, तो ही एटीसी टेक ऑफ देगा, नहीं तो नहीं देगा। उसके बाद ही आप टेक ऑफ ले सकते हो, फिर तो इधर बात नहीं करोगे, एटीसी क्लियरेंस कंप्लायंस करोगे और कंप्लायंस करते करते बात करोगे। फिर पहले आपको फ्लैप्स ऊपर लेने तक आपको बस काम ही करते रहना है। समझ रहे हो क्या बोला अभी? आर यू फॉलोइंग? विक्टर टैंगो सियरा नवंबर इंडिया, आर यू Affirm, sir. फॉलोइंग? Yes, sir. Ready three. डिड यू हियर व्हाट आई Ready सेड? three. डिड यू हियर व्हाट आई सेड? रिक्वेस्ट टेक ऑफ Yeah. सुना Before था that, आपने? yes, sir. Yes. तो आपने क्या गलती किया समझ आया? पहले तो आप दिमाग में बना के कॉल नहीं ले रहे हो। दूसरी चीज, सही तरीके से नहीं बोला। कॉल साइन नहीं गेस करना है अनलेस कॉल साइन क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया है। ठीक है। सी अनदर एयरक्राफ्ट ऑन बेस लाइक रनवे 32 will be able to take off before they land. Request enter runway to correction. Request enter runway 32 ready to expedite. अपने हिसाब से पायलट कैसे बात करेगा एटीसी से? कॉन्फिडेंस दिला रहा है एटीसी को। द एग्जाम इज ऑल अबाउट दैट। रिक्वेस्ट डिपार्चर इमीडिएटली, क्या इतना घाई क्यों कर रहे हो? क्या हो गया? वो क्या गुंडे वाली प्लेन है क्या? कोई अटैक करने वाला है क्या तुम पे? क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा? बोले यार सर वो प्लेन वहां पे है बट आई बी एबल टू टेक ऑफ बिफोर इट लैंड्स, या फिर आई बी एबल टू डिपार्ट बिफोर इट लैंड्स। डिपार्ट डालो, टेक ऑफ मत बोलो। टेक ऑफ खुद से नहीं, टेक ऑफ एक ही टाइम यूज करना है, व्हेन वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ वी से रिक्वेस्ट टेक ऑफ। बस क्या ऐसे रिप्लेस कर दो, वुड बी एबल टू डिपार्ट बिफोर इट लैंड्स। वुड बी एबल टू डिपार्ट बिफोर इट लैंड्स। रिक्वेस्ट एंटर रनवे 32, इतना भी बोल दोगे चल जाएगा। रेडी फॉर एक्सपीडिशन हैंडलिंग नहीं भी बोलोगे तो चल जाएगा। समझ रहे हो? एवरीथिंग इज पॉसिबल एज लॉन्ग एज यू मेंटेन द लॉजिक। लॉजिक के साथ साथ आर्टी फ्रेज लैंग्वेज अपनी, बस। आर यू फॉलोइंग? Affirm, sir. कुछ क्वेश्चन से पूछो। एनी क्वेश्चंस? नहीं तो sir, अभी तक आपने क्लियर कर दिया। समझ आ रहा है ना? ये सेशन प्रोडक्टिव होना चाहिए, है ना? हम्म। Affirm, sir. फिर फिर तुम समझ गए कुछ तो गड़बड़ हो रहा है एंड तुम क्वेश्चन नंबर बोलना छोड़ दिए, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू कर दिए। कभी कभी एग्जामिनर्स गुस्सा करेंगे इस बात पे, बार बार याद दिलाएंगे तुम्हें और बुरा लगेगा। कॉन्शियस रहो, हर क्वेश्चन शुड बी अ फ्रेश स्टार्ट। एवरी न्यू क्वेश्चन इज अ चांस फॉर यू टू स्कोर 20 मार्क्स। फर्क नहीं पड़ता पहले वाले हमारे खराब हो गए तो हो गए। आप अपना डेटा कैमरा बंद रखो। मेरे को नहीं पता बट आपको बहुत फ्रीज हो रहा है बार बार, क्या हो रहा है? आपको कॉल्स वॉल्स आ रहे हैं क्या? वाई यू नहीं फील? सर, मेरा बस आईपैड में बस सर नेटवर्क का होगा क्योंकि अ, उसका रेंज बहुत कम है। तो फिर मैं रूम वाईफाई पे बैठा वाईफाई हूँ। कुछ नहीं है क्या? हाउस माई रीडेबिलिटी? नहीं, रेडियो फोर सर। मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरी क्वेश्चन इज अ फ्रेश स्टार्ट टू स्कोर 20 on 20, 10 on 10। पहले मिस्टेक हुआ नहीं हुआ, आपको सेम स्ट्रैटेजी इसमें फॉलो करनी है। ठीक है, वहां मिस्टेक हो गया, कुछ नहीं कर सकते, 10 मार्क तो मिलेंगे 20 में से कम। ठीक है, इसमें मेरे को आउट ऑफ लेके आना है। कितनी मिस्टेक करी है इसमें आपने? ऑल एयरक्राफ्ट को एक ही बार बोला, आपको ऑल एयरक्राफ्ट 2 बार बोलना था। शुरू में कुछ तो बोला, समझ नहीं आया, पता नहीं आपने 2 बार बोला, तो लिखा तो 2 बार है बट बोला एक ही बार था आपने यहाँ पे। सर वो मैंने एक्चुअली तब कंट्रोल को कॉल किया और फिर मैं कॉल साइन दिया था, फिर मेरे ऐस को ऐस याद ऐ- आया कि ऐसे होता है ना, तो अच्छे से डिसरिगार्ड करना चाहिए आपको। जिसको कॉल किया उसको कॉल करने का, खुद का नाम बोलने का और बोलने का डिसरिगार्ड अच्छे से, ताकि वो आपका वेट ना करे। उनको क्या पता मैं इमरजेंसी में कॉल कर रहा हूँ उनको। अच्छे से W1 W2 डिसरिगार्ड और फिर कॉल लेना है अपना अच्छे से। दिखाना है एटीसी को कि हमको आता है आरटी। हिंदी समझ रहा है ना आपको सबरीश? यस सर। अफर्म। अब पूछना ही भूल गया। बॉम्बे रहते हो इसलिए आई वाज अज्यूमिंग यू नो हिंदी। अफर्म सर, born and brought up halfway in Mumbai itself. So everything I'm saying making sense, right?
Yes, sir. Just trying to make Okay. you comfortable. Already मैं इतना stern feedback दे रहा हूँ. I don't want you to not be comfortable. समझ रहे हो? That's why. Anything you don't understand, ask me to. I'm comfortable, sir. Sorry. Say again. I am comfortable, sir. Good, good, good. I am comfortable, sir. Hmm. Call was not perfect. Again, first frame the call in mind and then give the call. Okay. कुछ स्टार्टिंग में गड़बड़ नहीं होगी अगर आप कॉल को दिमाग में बना के लोगे तो कंट्रोल को भी कॉल नहीं जाएगा. घाई मत करो. ऑलवेज मेक अ फ्रेश कॉल इन योर माइंड. Notice mistakes, fix those mistakes, and then take a proper call. Are you following this strategy? Will you follow this? So, हाँ. ये कॉल बहुत इजी कॉल है. आरसीएफ कॉल्स will do, आर sir. योर चांस. आरसीएफ कॉल्स आर योर चांस टू स्कोर 20 on 20, 18 on 20, 17 on 20. Don't make mistakes. आपने ज़्यादा एरर तो नहीं करे. क्लैरिटी में कुछ प्रॉब्लम थी. लॉग तो आपने बराबर करा है. विल डिसेंड 500 फीट बोला था. फ्लाइट लेवल 500 सुनाई दिया वहां पे. और फ्लाई बोला पैरेलल. बोलो विल फ्लाई पैरेलल ऑन डेविएटेड ट्रैक. एक्सियल लाइट्स स्विच्ड ऑन. कीप अ लुकआउट. रेडियल डीएमई रूट ठीक है. अनेबल आरवीएसएम ड्यू इक्विपमेंट. नेगेटिव कॉन्टैक्ट विद एटीसी. एयरक्राफ्ट डेविएटिंग ऑन ओन. ऐसे बोलो अच्छे से. You're resembling the aircraft now. Aircraft deviating on own to the right, turning right for 15 nautical miles. At 10 nautical miles, will descend 500 feet and fly parallel on deviated track. All exterior lights on. Keep a lookout. ऐसे आराम से अच्छे से कॉन्फिडेंटली सारे प्रोविजंस दिए हमको रेगुलेशंस में. डीजीसीए ने, आईकाओ ने. हमें बस फॉलो करना है और आराम से करना है. कुछ नहीं होगा. अलर्ट रहना है. कंफर्टेबल रहना है. टैक्सी वाले में बहुत गड़बड़ था. ये वाला कॉल ठीक था. 20 on 20 मिलता था यहाँ पे आपको. बट क्योंकि आपने थोड़ा डेड एंड लिया, कॉल साइन लिया, और आपको एटीसी ने बोल दिया गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैड गुड चांस बट बैड लक. और कुछ नहीं. ऐसा. एग्जामिनर डिडंट गिव यू अ चांस टू प्रूव योरसेल्फ. और जितना लिखा उसके बेसिस में 10 ही मिलेगा वाला डिसीजन आ गया. सिंपल. बिकॉज ऐसा होता है कभी कभी. यू हैव टू बी नॉट लीविंग एनी रूम फॉर एरर. बस. ये जो था ये भी ठीक था. 10 में से आपको 5 मिल रहे हैं. नॉट बैड. रिप्लाई जो था तो ऊपर आपको 11 में से 10 मिल गए. यहाँ 10 में से 10 मिल गए. सो फॉर मेंटेनिंग 50-50 नॉट बैड. यू नो नाउ हाउ टू फिक्स द एरर. वो एरर फिक्स कर लो. आप देखो सीधा 80-85 मिलेंगे आपको हर क्वेश्चन में. समझ रहे हैं आप? Affirm. Victor Tango, Sierra Nova, India. Pan 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 pan. All aircraft in the vicinity of Nagpur. Victor Tango Bravo Romeo correction. All aircraft in the vicinity of Nagpur. रूट नवंबर 877. तो रूट बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको. आप बोल सकते हो ऑल एयरक्राफ्ट इन द विसिनिटी ऑफ नागपुर ओवर नवंबर 877 और एट नवंबर 877. या फिर नवंबर 877 भी बोल सकते हो. विक्टर टैंगो ब्रावो विक्टर रोमियो. फिर से आपने बोला रूट नवंबर 877. सो ये 2 बार रिपीटेशन आ गया है. वो आपने क्या पता करेक्शन बोला क्या किया. इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेम करके कॉल दो दिमाग में. सारी मिस्टेक्स पहले ही वेरीफाई हो जाएंगी. इंपॉर्टेंट समझ रहे हो आप? है ना? इंपॉर्टेंट समझ Affirm. रहे हो ना? इट्स इजी. यू जस्ट बी कॉन्शियस एंड डू इट. इट्स इजी. सब अच्छे करते हैं इवेंचुअली. ओके. एयरबस 320 से आप बोल सकते थे. आपने विक्टर टैंगो ब्रावो विक्टर रोमियो बोल दिया. रेडियल डीएमई ठीक था. फ्लाइट लेवल रेडियल डीएमई ठीक है. ठीक था और अच्छा हो सकता है. सिंपल. ज़्यादा नहीं काट सकते. बट ठीक है. आपको मैं जनरस. Aircraft सॉरी. बोलना क्या? सॉरी. रीड यू टू से अगेन ऑल. So,
Do I need to give the aircraft type in this call? बाकी लोग को पता होना चाहिए ना कौन सी एयरक्राफ्ट है, लॉजिकली सोचो। आपके एयर स्पेस में एटीआर होगी, कोई चार्टर प्लेन होगी ऊपर नीचे, कोई बोइंग होगा, कोई 777 होगा, कुछ ना कुछ होगा। हाउ विल दे स्पॉट यू? कॉल साइन थोड़ी इतने प्यार से इतने फास्ट स्पीड में दिखने वाला। लॉजिकली सोचो ना, कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए। पहला कॉल है सारी एयरक्राफ्ट को जो आपके विसिनिटी में है। और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है? ये कंट्रोल के फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, मतलब जो भी नागपुर के एसोसिएशन में थे ये फ्लाइट लेवल के रेंज में, सबके लिए कॉल जा रहा है। यहाँ तो बनता है ना एक बार बोलना एयरक्राफ्ट 32, एयरबस 320। तुम्हें नहीं लगता? Affirm. लॉजिक, लॉजिकल रीजनिंग इज द की टू क्लियर एग्जाम। क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, दैट्स इट, दैट्स इट। आर यू फॉलोइंग? मुझे बार बार एक्नॉलेजमेंट दो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। नहीं तो पता चला ऐसे ही बकबक कर रहा हूँ मैं। Affirm. I am following Victor Tango वेरी गुड, Sierra वेरी गुड। number indeed. समझ रहे हो अपन भी कितना डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं अभी? एक दूसरे से अश्योरेंस आना कितना जरूरी है। मैं बार बार पूछ रहा हूँ आ रहा नहीं आ रहा, आपको बताना जरूरी है आ रहा नहीं आ रहा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू इन आरटी। समझ रहे हो? एग्जाम में भी हम वही करते हैं, रियल लाइफ में भी हम वही करते हैं। वो समझ के Affirm. पेपर दोगे ना, आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं। आप ऑलरेडी 50-60 लाते हो, 20 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 80 क्लियर पार्ट 1। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 is not pan pan, unnecessary pan pan. Finals, anything happening on the runway, initiating go around, correction, initiating missed approach and go around procedure. पहले missed approach and then go around. Simple. विशाखापट्टनम टावर, विक्टर टैंगो ब्रावो विक्टर रोमियो ऑन फाइनल्स। अच्छा लगा आपने फाइनल्स गैस किया, वेरी गुड। ऑन फाइनल्स रनवे 27, जो भी रनवे आपको नहीं दिया था तो आप एज्यूम कर सकते हो, ऑब्वियसली तुम्हें दिख रहा है रनवे का नाम, अजम्पशन रहेगी। 03 नॉटिकल माइल्स इनबाउंड ऐसे भी बोल सकते हो क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू ऑन द क्वेश्चन। यूज ऑल योर रिसोर्सेज। सी अनदर एयरक्राफ्ट ऑन रनवे 27, बैक ट्रैकिंग, appears to be a training aircraft। अच्छे से बता देना है। Initiating missed approach and go around procedure। Maintaining 1500 फीट। अगर तुम्हें दिया है, नहीं दिया है चल जाएगा, मत बोलो। ये मिस्ड अप्रोच गो अराउंड प्रोसीजर ऑलरेडी एक्चुअली अराइवल चार्ट्स में कहीं ना कहीं मेंशन्ड होते हैं, फिक्स्ड रहता है। तो एक 3 नॉटिकल माइल पे आपका एक मिनिमम ऑल्टीट्यूड होगा, फिलहाल वही मेंटेन करोगे या थोड़ा सा क्लाइम करके रनवे हेडिंग के साथ साथ सीधा फ्लाई करोगे एंड आगे एटीसी सर्किट को ज्वाइन कर लोगे, सिंपल वापस। ये इमेजिनेशन रखना है आपको। कुछ तो गड़बड़ हो रही थी यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा था, फिर से वही गलती। कॉल लेते लेते सोच रहे हो, कॉल को पहले ही सोच लो फिर कॉल दो, तो वो मिस्टेक नहीं होगी। पैन पैन अर्जेंसी की कॉल शीट्स देख लेना, ये कोई पैन पैन कॉल नहीं है, ये आए दिन होते रहता है। ऑब्वियसली इस पे इंक्वायरी होगी, बट आपके लिए कोई थ्रेट नहीं आएगा। समझ गया? आपने देख लिया, आप ऊपर जा Sir, रहे हो, ठीक है, a इंक्वायरी doubt. होगी बोलो ना। तो हर क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं ना, तभी थोड़ा मतलब डेड एयर है तो ठीक है क्या? वापस बोलो, हर क्वेश्चन से नए क्वेश्चन पे जाते हैं तो क्या? मतलब तभी डेड एयर है तो ठीक है क्या क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले? मैं ये चीज पेपर स्टार्ट होने से पहले बोल चुका हूँ, सुन नहीं रहे थे शायद, या नेटवर्क डिस्कनेक्शन होगा, वापस याद दिलाता हूँ। जस्ट वांट यू टू बी अवेयर, whenever you start a new question, you can take your time, it's not called dead air। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगर आपको बोल दिया गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यू आर सपोज टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, you can take 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 1 minute, your choice। That is not called dead air। Dead air is that time when we have established contact and we are quiet, not talking। जब तक ये कॉल, इसको कॉल बोलते हैं जो खत्म होना बहुत जरूरी है। कॉल खत्म नहीं हुआ मतलब कॉल चल रहा है। समझ रहे हो? कॉल खत्म होना बहुत जरूरी है, इसमें आपके रीडबैक्स बहुत। क्वेश्चन नंबर 4, आप एक्चुअली बहुत फास्ट फास्ट ट्राई कर रहे थे, बट यहाँ आपको थोड़ा टाइम लगा था। इफ यू सी, आपको अबाउट 40 सेकेंड्स लगे हैं, बट 40 सेकेंड्स में कितना ही टाइम जाता है, यूं निकल जाते हैं 40 सेकेंड्स। Yes, every question you take your time, frame it in your mind, and then take the call. Goes without saying.
दो क्वेश्चंस के बीच में एक एक मिनट लगेगा, चलेगा, दो दो मिनट लगेगा, चलेगा। यू हैव टू फोकस ऑन एक्यूरेसी। आर यू फॉलोइंग? So, आप तो बस ऐसे कोई सब्जी काट रहा हो ना, वैसे चल रहे थे। ऐसे ऐसे ऐसे, 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 चलो चलो खाना बनाते हैं, डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो। क्यों? सब्जी थोड़ी बना रहे हैं यहाँ पे, हम तो प्लेन उड़ा रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग। थोड़ी गलती हो गई यहाँ वहाँ, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं यार बड़े लेवल पे। देखो ना यहाँ पे तुम्हारा मेरे लिए रिसेप्शन ऐसा था, देख रहे हो आप? आई वोंट ब्लेम यू, बस बता रहा हूँ ऐसा है। हो सकता है थोड़ा नेटवर्क इशू भी हुआ होगा, बट तब लग नहीं रहा था नेटवर्क इशू एक्चुअली। तो सर अभी अभी नेटवर्क इशू आ रहा है। कोई बात नहीं, वी आर एक्सपर्ट इन कम्युनिकेशन, विल एंश्योर द मैसेज रीचेज। ऐसा है, वापस से आप ये पार्ट ऑफ द सेशन इट्स रिकॉर्डेड, यू कैन ऑलवेज रिप्ले टू गेट द एडवाइस अगेन इफ यू वांट। सिंपल, फास्ट ट्रैक करके वो पार्ट बिट्स एंड पीसेस रिप्ले कर सकते हो हमेशा आप। So, I made a playlist on your name and these will be there always for you to check. Nothing to lose. Backup plan हो गया ना वो। It's like our CVR basically. तो यहाँ बहुत गड़बड़ थी, बट ठीक है। पैन पैन तो नहीं था। पैन पैन क्यों बोला आपने? कितना कंफ्यूजन। कि क्वेश्चन पेपर में देखा है क्या पैन पैन? सर वो एयरक्राफ्ट मतलब बैक ट्रैकिंग कर रहा था, इसलिए मेरे को जल्दी पैन पैन लगा। क्या दूसरे के होता है एयरक्राफ्ट बैक ट्रैकिंग आपके निकाल हिसाब से? के क्या होता है बैक ट्रैकिंग? एक एयरक्राफ्ट ने ऑपोजिट साइड ऑफ द रनवे से एंटर करके अ, जहां हम लोग अप्रोच कर रहे हैं उधर आके यू टर्न लेके टेक ऑफ करने का। वो टैक्सी करता है इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन अ रनवे, ऐसा। ओके। सिंपल। वो ऑब्वियसली यू टर्न लेने आया है कि क्या कर रहा है हमें नहीं पता। क्या पता वो ऑपोजिट एंड पे लैंड कर लिया हो गलती से, और मस्ती में एकदम टैक्सी कर रहा हो रनवे वेकेट करने के लिए। हो सकता है वो भी कर रहा हो। हमें तो बैक ट्रैकिंग ही लग रहा है भाई। बैक ट्रैकिंग मतलब दे आर मूविंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन द रनवे। पहली बात तो मैं फाइनल्स पे हूँ, कोई और एयरक्राफ्ट या व्हीकल रनवे पे होना ही नहीं चाहिए। आया कैसे? अगर बैक ट्रैकिंग भी नहीं है, कुछ भी दिख रहा है, हम पैन पैन नहीं बोलते हैं वहां पर। पैन पैन तब होगा सो जब वो डेफिनेशन में अलाइन होगा। सिंगल इंजन फेलियर हो गया, बर्ड हिट हो गया, कुछ भी हो गया जहां लग रहा है डिस्ट्रेस नहीं है, वो पैन पैन हो गया। बोलो, और कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। फर्स्ट टू क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली ग्राउंड कॉल से होगा ना? मोस्ट प्रोबेबली या, यू कैन गो विद द एक्सपेक्टेशन बट बी ऑल्सो रेडी टू बी सरप्राइज्ड, दोनों। बट या, ऑब्वियसली होना एंड चाहिए, बिकॉज वो आपको होना चाहिए क्योंकि वो आपको सारे एग्जांपल्स देना चाहेंगे। बट आई वुड से एक्सपेक्ट सब करो, बट बी ऑन द लुकआउट फॉर समथिंग न्यू टोटली ऑल्सो। यू आर ट्रेन्ड इन अ वे दैट कुछ भी हो आप अच्छे से ही करके आओगे। रीड यू सर फिर वन। हम्म। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन मोस्टली aviation या deviation हो देखो शबरीश, अर्जेंसी या डिस्ट्रेस। दिस वॉज अ वेरी सिंपल पेपर। कभी कभी आपको चार क्वेश्चंस में आठ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सब क्वेश्चन। बी रेडी फॉर एवरीथिंग। बी रेडी फॉर वन वेदर डेविएशन, one RCF, one distress, one urgency, one arrival, and before that, ground calls. कभी कभी लैंडिंग अराइवल रिपोर्ट भी देनी पड़ सकती है आपको। टैक्सी ब्रेक्स हॉट, सॉरी, ब्रेक्स हॉट ऑन रनवे भी हो सकता है। बी रेडी फॉर एवरीथिंग। जितनी सिचुएशंस पड़ी है सबके लिए रेडी रहो। ऐसा सोच के नहीं जाने का एग्जाम में, समझ रहे हो? इन द मोमेंट एग्जाम में क्या हो रहा है वो तभी पता चलेगा, आरटी आप पढ़ के आए हो, बस। ऐसे सोचना है क्या हो रहा है, उस हिसाब से मैं कॉल्स लूंगा। कॉल्स लेने मुझे आने चाहिए, एंडिंग विद कॉल साइन, डेड एयर नहीं देना।
फिर कॉल स्ट्रक्चर की बात हो गई एंड एक्यूरेसी की कॉल हो गई, वो आप दिमाग में कॉल बनाने के बाद कॉल ट्रांसमिट करना है। इट्स एज इजी एज दैट। मैं आपको डायरेक्टली ये शॉर्टकट्स बता रहा हूँ, समझ रहे हो आप? बट affirm, एक्सपेक्ट वन ग्राउंड टैक्सी कॉल, वन रनवे के आसपास का ग्राउंड कॉल, ठीक है। एक्सपेक्ट वन डिस्ट्रेस, वन अर्जेंसी, दोनों में से एक आ सकता है। एक्सपेक्ट वन रीराउटिंग कॉल, जो वेदर की वजह से भी हो सकता है, नो टाइम के एयर स्पेस क्लोज की वजह से भी हो सकता है। एंड वन आरसीएफ विद एटीसी भी आप कर सकते हो, दूसरे एटीसी को बात करना वो हो गया। आरसीएफ विदाउट एटीसी ट्रांसमिटिंग लाइन भी हो सकता है। आरसीएफ विथ डेविएशन रिक्वायरमेंट, जो वेदर या आरवीएसएम में आता है, वो भी हो सकता है। रीरूटिंग के लिए भी रेडी रहो, कुछ भी हो सकता है, बी रेडी। एचएफ कॉल्स भी हो सकते हैं, एफआईआर रिपोर्ट, डिपार्चर रिपोर्ट, ट्रांजिट क्लियरेंस कॉल्स भी हो सकता है। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो तुमने कभी नहीं देखा हो। नहीं देखा है तो क्या हुआ, आपको पता है आप कहाँ पे हो, कॉल कैसे लेना है, 3-4 डब्ल्यूज का आपको आता है, जो है क्वेश्चन में वो दे देना है, कॉल लेना है क्लियरली। कभी नहीं भी पता चलता ना इंटेंट में क्या है, फिर भी आप कॉल अच्छे से लेते हो, एंड अप गेटिंग 12 to 14 मार्क्स इन सच कॉल्स। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यू हैविंग एक्यूरेसी ऑफ योर लैंग्वेज। आर यू फॉलोइंग? sir, following. सर वेरी। डाउट था एक और। बोलो ना। सर आईएलएस का ग्लाइड स्लोप का फ्रीक्वेंसी बैंड 3202 रुक 340 रुको मेगाहर्ट्ज। रुको, वो आपने पोस्ट किया है ना मेरे को। रुको रुको, पहले ये खत्म करते हैं, हुआ नहीं है। अफर्म सर, पहले जो बोले हैं वो करो, बाकी सब हो जाएंगे, वो 2 मिनट का काम है। अफर्म, जो भी टेक्स्ट पे, वो सारे डाउट्स मैं देख के आपके एक साथ क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। पहले पार्ट 1 तो पास करना है ना आपको, वो सब पार्ट 2 में आएगा। अफर्म सर। कुछ नया डाउट है तो पूछ लो, या उसको अपने लॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 समझे आप? अफर्म, तो ये क्या है, रिपोर्ट साइटेड अ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट बैक ट्रैक रनवे 27, कौन सिखाया ऐसा आरटी आपको? मैंने नहीं सिखाया ये सब। क्यों कर रहे हो क्वेश्चन पेपर जो मैंने नहीं करने बोला आपको? देखो उनका इन्फ्लुएंस आ रहा है यहाँ पे, वो मत सर पढ़ो वहां से सिर्फ। मैं मैंने ये सिखाया पहले ही एक नहीं है, ये लैंग्वेज आप लोगों को। इंस्ट्रक्टर से सीखा था, गलत तो है ये, वो इसमें मिक्स हो गया। ओके गलत सर। है। मत मत, मैं आपको समझाया है, वहां से सिर्फ इंटेंट लेना है फॉर दो सिचुएशन जो आपने कभी सॉल्व नहीं किए हैं, बाकी वहां का मत आने दो अपने दिमाग में, इतनी मेहनत बेकार जाएगी आपकी। तुमने तो कितना पढ़ाई करा है, कितना, मतलब फुल टाइम कॉलेज के बाद रात को पढ़ पढ़ के तुमने लेक्चर खत्म किया। वन ऑफ माय मोस्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट्स, उसका एडवांटेज मिलना चाहिए तो वो डिसएडवांटेज हो रहा है यहाँ पर फालतू में। यू डोंट नीड, स्टूडेंट्स ट्रेनिंग विथ मी डोंट नीड टू सॉल्व इवन वन क्वेश्चन पेपर, इवन देन दे क्लियर द एग्जाम्स। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो उस चीज को? आपने कर लिया, मतलब चल, आई डोंट वांट टू ब्रेक हिज कॉन्फिडेंस, कर लिया, कुछ तो काम ही आएगा, बट एक गलत इन्फ्लुएंस तो मत आने दो यार। सिंपल है क्वेश्चन पेपर, क्या है? यू सी ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट और रनवे बैक ट्रैकिंग। क्या करूंगा मैं इसको देख के? विशाखापट्टनम टावर, विक्टर टैंगो ब्रावो विक्टर रोमियो, ऑन फाइनल्स रनवे 27, 30 नॉटिकल, करेक्शन 03 नॉटिकल माइल्स इनबाउंड, सी अ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट बैक ट्रैकिंग ऑन रनवे 27। पूरा क्वेश्चन में से उठाया ना मैंने। क्यों एक्स्ट्रा साइंस लगाना है और वो चीज डालनी है जो हमने नहीं सीखी है? क्यों? सी अ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट ऑन रनवे 27 बैक ट्रैकिंग, वो भी बोल दो तो डिट्टो हो जाएगा। मैं बस थोड़ा आगे पीछे करने बोल रहा हूँ आपको। इनिशिएटिंग मिस्ड अप्रोच एंड गो अराउंड प्रोसीजर, खत्म। कितना इजी है 20 on 20 लाना इस पे। वो आगे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, मेंटेन रनवे हेडिंग सो एंड सो टाइम देयर आफ्टर, क्लाइंब टू दिस आर्ट, टर्न लेफ्ट सो एंड सो, रिपोर्ट रीचिंग, आपको उसका फीडबैक देना, रीड बैक देना था या कंप्लाई करना था, उसके बाद खत्म। इतनी इजी तो नहीं देते वो, उसके आगे वो भी करते हैं। तो आपको मोमेंट में रहना है, वो सब तो कोई रटा हुआ नहीं करके जा सकता ना, एटीसी रियल टाइम में क्या बोलने वाला है। Understand what the exam is about. I want you to be a organic learner so that in real life, when you are a pilot and problems come, you will use all your training and your resources and take correct decisions and actions instead of रट के जाना।
रट के जाने में बहुत लिमिटेशंस आ जाती हैं। आपको कोई नहीं बोलेगा रटना, इसलिए चेकलिस्ट दी जाती है पायलट्स को हर चीज के लिए। चेकलिस्ट फॉलो करो, क्यूआरएम फॉलो करो, क्यूआर एचक्यू क्रूसेस हैंडबुक सब फॉलो करो। क्यों? कभी क्यों नहीं बोलते मेमोराइज करके आओ? ओपन बुक होती है हमारी फ्लाइंग एवरी डे। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम नहीं है, वो एक टास्क है। ये आरटी एग्जाम भी एग्जाम नहीं है, एक टास्क है। यू हैव टू डू इट एफिशिएंटली। चेक हो रही है आपकी लैंग्वेज एंड फ्लुएंसी, बस आप उस पर ही फोकस रखना। क्वेश्चन नंबर 5 सो हाईली स्कोरिंग, आपको बहुत खराब मार्क्स मिले हैं इस पे। और ये विक्टर टैंगो ब्रावो होटल सियरा तो बहुत स्लो बोला है आपने भाई सर वो साहब। पूरा लिखना नहीं है क्या? पूरा क्यों लिखना है? हम पूरा लिखते हैं क्या? वी विक्टर हो गया ना हमारे लिए। आरटी लॉजिक कम हम्म, ऑन। आपको लिखना वी है, विक्टर को वी लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्यों अलग लिखोगे? एग्जामिनर ने सुन लिया ना, उनका काम है सुन के मार्क्स देना आपको। एविएशन स्पेसिफिक एब्रिविएशंस कैन बी ओके सर। रिटन एज एब्रिविएशंस, इट्स ओके। बिन शेयर वार्निंग एट आउटर मार्कर रनवे 20, ठीक है। मेरे को क्लियरली सुनाई नहीं दिया इसलिए 2 दिया है, +2 हो जाएगा। क्रॉस रेडियल 256 2 3,000 फीट और अबाव, यहाँ पे आपको वर्ड्स यूज करने थे। यहाँ पे आपने नंबर यूज करे हैं, उल्टा ऊपर नीचे कर दिया आपने। यहाँ मेरे को पता ही नहीं आपने अब 23,000 बोला है या 23,000 बोला है या 23,000 बोला है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपका लॉग इज अनक्लियर, समझे? लॉगिंग का इंपॉर्टेंस क्या है कि हम बाद में देखें तो पता चले कम्युनिकेशन कैसा था। नंबर्स में आप फुल लिखो, वर्ड्स लिखो, ठीक है। सर। आई एम गिविंग यू बेनिफिट ऑफ डाउट, नहीं मिला आपको 4, बट लॉग आपने सही नहीं किया। 2 3,000 बोलना था आपको यहाँ पर, ठीक है। 2 3,000 एटलीस्ट सर। बोलते हैं ना, 2 3 हमें पता है, 2 3 लिखते हैं। 1000 चेक हो रहा था यहाँ पे मेन। क्वेश्चन नंबर 3 एयरक्राफ्ट इज रिक्वायर्ड टू डेविएट बाय 15 नॉटिकल माइल्स ड्यू लाइन्स कॉल। एयरक्राफ्ट इज रिक्वेस्टिंग डेविएशन बाय 15 नॉटिकल माइल्स, ओके। एब्रिवेशन बुकलेट देखना और आर ई क्यू का क्या मीनिंग है चेक करना और मुझे दिखाना स्क्रीनशॉट भेज के, ठीक है। उसके बेसिस पे करेक्ट आंसर फॉर्मुलेट होगा इसका, ओके। टेस्ट के बाद करो, सर। कभी भी करो, मुझे भेज देना लेकिन। हम्म। सर। ठीक है। यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूँ 4, कोई बात नहीं, पर चेक करना और उसको अपडेट करना। मैं चाहता हूँ स्क्रीनशॉट दोगे फटाफट, बुकलेट गूगल ड्राइव से आर ई क्यू चेक करना है और मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है। और करेक्ट आंसर टाइप भी कर दोगे चल जाएगा। नो चेंज इन रनवे एंड लाइट ऑपरेशंस, क्रॉस वेरीफाई करना वहां से। चेंजेस लिखा है आपने, शायद चेंज है कि चेंजेस है, क्रॉस वेरीफाई करो, मेरे हिसाब से चेंज है, चेंजेस नहीं है, ठीक है। 3 मिलता है फिर भी आपको यहाँ पे, गुड। बोलने में अच्छा नहीं लग रहा था बट लॉग तुमने सही किया है, सो मेक श्योर यू हैव क्लैरिटी। रीडेबिलिटी खराब है तो रीडेबिलिटी चेक करके कॉल लेना है बस। और लास्ट है मेंटेन रेट ऑफ डिसेंट 700। रेट ऑफ डिसेंट का यूनिट क्या है? फीट पर मिनट, वो भी आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है, खुद से डालना है। तो सर वो कब आएगा 700 फीट तक? किधर आएगा? रेट ऑफ डिसेंट रेट ऑफ क्लाइम एफपीएम होता है, एफपीएम इज फीट पर मिनट। बाय डिफॉल्ट आपको डालना है, बिना यूनिट के समझ नहीं आएगा 700 क्या। मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो कोई बात नहीं। मेंटेन रेट ऑफ डिसेंट 700 फीट पर मिनट टिल 6,000 फीट, और टिल ऑल्टीट्यूड 6,000 फीट चल जाएगा, बट ऑल्टीट्यूड को हम जनरली 6,000 फीट बोल सकते हैं। ऑल्टीट्यूड यहाँ नहीं भी बोलोगे तो चल जाएगा, बट बोला तो भी चल जाएगा, दोनों ऑप्शन है। सो मेंटेन रेट ऑफ डिसेंट 700 फीट पर मिनट, मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, 700 भी नहीं बोलूंगा, बट 700 भी बोल सकते हैं। मेंटेन रेट ऑफ डिसेंट 700 फीट पर मिनट टिल ऑल्टीट्यूड 6,000 फीट। एफपीएम फीट पर मिनट, ऐसा फीट पर मिनट लिखते ऐसा है, बोलेंगे फीट पर मिनट, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 सुनने में इतना खास नहीं लग रहा था बट लॉग देख के अच्छा लग रहा है। बी श्योर यू आर सेइंग करेक्टली, सो दैट लास्ट के 20 मार्क्स तो हमें चाहिए, ठीक है। तुमने सर। लिख लिया मार्क्स, मुझे कोई टोटल करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अंदाजा देना था सिर्फ। फॉर मी दिस इज नॉट जस्टिफाइंग योर फाइनल प्रिपरेशन, दिस इज योर फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस, फर्स्ट टाइम फीडबैक।
Based upon, are you able to hear me? Yes, sir. Affirm. Based upon this feedback, 24. या बेस्ड अपॉन दिस फीडबैक कल मॉक लेंगे, उस पे हम देखेंगे कितना है कितना नहीं है। कितना भी हो, कम हो ज्यादा हो, कॉन्फिडेंस से जाना है, लॉजिकल रीजनिंग से जाना है। आज के फीडबैक पे काम दिखना चाहिए मुझे कल के मॉक में। आर यू फॉलोइंग? Affirm. कल कितने बजे तुम चाहोगे मॉक देना, अवेलेबिलिटी, ये सब पे काम करके मुझे व्हाट्सएप कर दो मैसेज। अकॉर्डिंगली मैं तुम्हें कंफर्मेशन देता हूँ। सुबह हो रहा है, शाम को हो रहा है, देखते हैं। ज़्यादा पैनिक मोड में नहीं होना चाहिए। सुबह कर लेंगे तो भी ठीक है, अर्ली इवनिंग कर लेंगे तो भी ठीक है। आई वॉन्ट यू टू हैव लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड एंड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड रिलैक्स्ड when you go to the exam. I don't want you to go hyper in a panic mode and all. फॉलो करो जो मैं बोल रहा हूँ। नेचुरल क्या आ रहा है उसको फाइट करो। 2 दिन की बात है सिर्फ। समझ रहे हैं? Affirm. With यू performance. डिजर्व Sure. दैट, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना? वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड काम रहेगा तो ये नई नई चीज़ें कॉन्शियसली तुम डाल भी पाओगे, एंड अपने आप हमें जो डिफरेंसेस चाहिए वो मिल जाएंगे सिर्फ। है ना? जो भी आपके टेक्स्ट पे Oh, क्वेश्चंस हैं मैं आपके सॉल्व कर दूंगा। यू फोकस ऑन योर फीडबैक एंड डू योर रिविजन अकॉर्डिंगली। मुझे कोई बड़ा एरर नहीं लग रहा है सबरीश। ओवरऑल आई एम हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस। गुड जॉब। वर्क ऑन द फीडबैक। रियली हैव डन सम ग्रेट थिंग्स। भले तुमने इनिशियल स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो की बट यू ट्राइड योर बेस्ट टू हैव सिचुएशनल अवेयरनेस। सो मैं जब लॉजिकल रीजनिंग बोलता हूँ वहाँ पे सिचुएशनल अवेयरनेस आता है। यू ट्राइड टू सी, भले कॉल दे रहे थे बट तुमने देखा, मुझे अच्छा लगा। फालतू में कॉल साइंस मत बोलो, एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट ही बोलो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी अदर एयरक्राफ्ट ट्रैफिक। समझ रहे हो? एंड जो affirm. मैंने सिखाया है, जो हमने पढ़ा है, दैट इज बाय मैनुअल ऑफ आरटी बाय आईकाओ। इसलिए मैं बोलता हूँ सिर्फ वो ही फॉलो करो। बाहर जो चल रहा है उनको वहां पे रहने दो, अपन यहाँ नहीं यूज करेंगे। कोई भी इंटेंट है, प्रेजेंस ऑफ माइंड से सोचो क्या होगा क्या होगा, कॉल समझ लो, सिचुएशन समझ लो, दिमाग में बना लो, फिर बोल दो। मे बी 1 W वहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे होगा बट बाकी 3 तो परफेक्ट होने चाहिए तुम्हारे। तो 15-14 मार्क तो मिल जाएंगे, भले तुम्हें इंटेंट का कुछ आइडिया हो या ना हो। दिस इज हाउ द एग्जाम इज। ओके? ओवरऑल गुड Affirm. जॉब, नथिंग टू वरी। फोकस ऑन फीडबैक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो। रिलैक्स। आराम से करना है प्रिपरेशन। 2 घंटा कम कर लो चल जाएगा। तुमने करा है मेहनत, बट अच्छे से करो, क्वालिटी से करो। आई विल बी अवेलेबल इफ यू नीड मी। कोई भी डाउट्स है, तुम्हें लग रहा है अनरिजॉल्व है, रिमाइंडर डाल दो, सर ये मेरे तो रह गया बता दो। बाकी डोंट वरी अबाउट इट। आई वांट यू टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी। बी पॉजिटिव, बोलो यार सर अच्छे से हो गया एग्जाम, थोड़ा बहुत स्ट्रेस आया बट मैंने मैनेज कर लिया। अच्छा था। पार्ट 1 भी अच्छा था, ट्रिकी था, डिफिकल्ट था, बट अच्छा था। इन द वर्स्ट केस सिनारियो ऐसे ही होता है, हर बच्चे बोलता है सर बहुत मुश्किल था बट हो गया। ऑब्वियसली ऐसे ही होना चाहिए, प्लेन उड़ा के आए हैं हम लोग, सिमुलेट करके आए हैं, मुश्किल तो होगा ही, बट अच्छा था। सिंपल। पार्ट 2 पे अच्छा था सर, 70% आंसर्स दिए मैंने। पार्ट 2 पे आपकी ब्रीफिंग करूंगा मैं कल। समझ गए आप? डोंट वरी, विल हैव इनफ टाइम टू डू इट। सो अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से मुझे मैसेज कर दो। उस हिसाब से अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम देख के तुम्हें मैं स्लॉट देता हूँ। टाइम रहेगा कल का स्लॉट उतने में ही करना है। आज एक्सपीरियंस आ गया आपको तो कल टाइम में कर लेंगे हम लोग। ठीक है? और बताओ कैसा फील कर रहे हो? नाइस टू सी यू फॉर द फर्स्ट टाइम। Yes. इतने दिन से सबरीश मेरा चैंपियन स्टूडेंट, हमेशा से ऑन द गो, फॉलोइंग ऑल इंस्ट्रक्शंस। आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। अच्छा लगा मुझे। बीच में ऐसे लग रहा था रिसेंट डेज में तुम थोड़ा स्ट्रेस ले रहे हो, बात नहीं मान रहे हो। उस दिन भी फोन पे बात कर रहा था तो तुम्हारे दोस्त वोस्त बुला रहे हैं, तुम्हारा ध्यान भटक गया। बट आई एम लाइक इट्स ओके। अच्छा कर रहा है उसने, आई एम नॉट गोना टेल हिम एनीथिंग। सही कर रहा है। सो ओवरऑल अच्छा था। फीडबैक पे ध्यान दो। आराम से एंजॉय करो प्रोसेस को, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। सीखना भी है, सिर्फ बिना सीखे एग्जाम पास नहीं करने हैं। समझ गए ना? बाद में कोई नहीं Affirm. सिखाने वाला ये सब। ये सब करके फ्लाइट ट्रेनिंग जाओगे तो वहां देखोगे कि तुम्हारी फिर क्या वैल्यू हो जाएगी वहां पे खुद से। ऐसा होता। चलो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो विल रैप इट अप। Yes, sir. चलो, Negative questions. बी पॉजिटिव। आई लुक इनटू योर चैट बेस्ड क्वेश्चंस, गिव यू अ रिप्लाई। इफ देयर समथिंग दैट यू रियली नीड अर्जेंटली, हाईलाइट कर दो, पैन पैन लिख के। मैं समझ जाऊंगा। है ना? रिमेंबर द फीडबैक। अभी जाओगे जो भी करोगे थोड़ा दिमाग में घूमने दो सब कुछ। है ना? सोचो सब कुछ।
क्या सीखा, क्या करना, क्या नहीं करना, कहीं भी कुछ भी डाउट है सीधा मेरे को मैसेज छोड़ दो। तो ये ऐसे बोला था ना सर, वैसे बोला था ना, ऐसा करूँ वैसा करूँ, ये करूँ वो करूँ, बस सोचो उस चीज पे, कॉन्शियस रहो, है ना। नहीं तो सुन के निकाल दिया ओके। तो वैसे ही शॉर्ट टर्म मेमोरी में बातें, ध्यान नहीं रहेगा तो और निकल जाएगी हमारे दिमाग से फिर। चलो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आई सी यू, ओवरऑल अ गुड जॉब, कीप इट अप, टुमारो विल स्लाइटली डू अ बेटर जॉब, इन द एग्जाम विल डू मच बेटर जॉब, बस। Okay. चलो, सी यू, ओके, Thank टेक you, केयर, sir. Yes. मोस्ट वेलकम।